Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Unacademy, the largest e-learning platform in India. And today's topic of discussion is geography. So before discussing the concepts of geography, let's discuss some relevance and significance of geography as it is there in general studies paper, as well as this is there. You can take geography as an optional in the civil service examination as well. The most important aspect, the most important academics I can say as compared to others, the relevance and significance of the subject in the examination, in the OPSC examination is very high. In the prelims, you are going to be definitely asked many questions, many MCQs from the topic. Then geography as an optional subject, it will help you in many ways. First, it will entirely cover your general studies paper. Second, apart from geography, geography is not only about geomorphology, climatology and oceanography. Rather, geography also includes cultural geography, political geography, regional development, regional planning, settlement, human development. All those things are also included in the concepts of geography. And those who are taking geography as an optional in their examination, definitely they are in an advantageous position as compared to their competitors. The most important aspect of geography optional is you will be asked with mapping questions worth of 60 marks. And a mapping question 60 mark maximum to maximum you will be taking 5 to 10 minutes. In case of other optionals, if you are going to write an essay type long question worth of 60 mark, then definitely you will need 30 minutes. By attempting the mapping section from the geography optional, you can save 20 to 25 minutes, and that can be devoted to write other long questions in geography. My name is Samrat Sir Mishra now I have started teaching in Unacademy. Use this reference code EGOS to get subscription to Unacademy, and by using this referral code there will be 10% off upon your subscription amount. In Unacademy Plus, I am taking many subjects: economics and social development, geography for general studies, geography for optional, and internal security issues as well. Enter explanation description box or diya jaichi. You can check it out. You can follow me in Unacademy to get access to many such type of classes. YouTube class, special class je completely free of cost अछि अपन Unacademy app through करि परिबे. Unacademy Plus को subscribe करिया पई reference code EGOS use करंतु, there will be 10% off upon your subscription amount. Next, coming to the discussion on geography. Geography will help you in many ways. This is a subject where you can use many number of diagrams, flow charts, maps, so that your answer will be enriched. And geography is also a good optional, a scoring optional in the civil service preparation. You will be finding many candidates within the rank of 100. They take geography as their optional because it will help you in many ways. I discussed in general studies paper, in the entire GS paper, apart from the history and some parts of science and technology, other parts of geography optional आपको many way रे help करियो. जे सोशल डेवलपमेंट रो इश्यूज कोंतु, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोंतु, ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन कोंतु, ये सब थरे ज्योग्राफी ऑप्शनल आपनको हेल्प करियो. सो ज्योग्राफी रो किछि कोर कांसेप्ट, बेसिक कांसेप्ट मु डिस्कशन करबा स्टार्ट करबा. एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी रो मु स्टार्ट करबी बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी. क्लाइमेटोलॉजी बुझिले इजीली नेक्स्ट टॉपिक हमको बुझिया पई सहज होबो. छोटो छोटो टॉपिक ताको सिंपल और लुसिड वे रे एक्सप्लेन करबा को मु ट्राई करबी इन दिस सेशंस. यदि हमें क्लाइमेटोलॉजी रो सिलेबस देखिबा, देन देयर इज टेंपरेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हीट बजेट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, प्लैनेटरी एंड लोकल विंड्स, monsoon and jet stream, air masses and the front, temperate cyclone and tropical cyclone, types and distribution of the precipitation, Köppens and Thornwald's classification of the world climate, hydrological cycle and climatic changes there. This is the entire syllabus that you need to go through for the optional as well as for the general studies paper. So, study of climate. The study of climate, why is it required? In the study of climate, what we study exactly? We study about the elements of the climate, study about their nature, their variation,
Elements of the climate means the most important element of the climate is temperature. We talk about temperature. What exactly temperature is? What is the source of temperature? What is the source of heat for the earth? This is incoming solar radiation, insolation, which comes in the form of a shortwave radiation, and the earth absorbs it. Some of the insolation that is re-radiated back, that is re-radiated to the outer atmosphere, which is known as albedo, and the rest of the insolation, many of them are absorbed in the atmosphere itself by the cloud itself, and earth's surface रे भी किसी absorb होई करिवे. Then when the earth re-radiates it back to the atmosphere, ताको हमें terrestrial radiation बोली कहती, जे long wave terrestrial radiation. So elements of the climate रे basically हमें discuss करिवा related to temperature, nature, variation of the climate, ये सब ऊपर है. Then it discusses the climatic features, the permanent high and the low pressure centers, air mass, their circulation, atmospheric circulation, planetary winds, primary, secondary and tertiary winds, tropical cyclone, temperate cyclone, different other climatic phenomena. I will discuss one by one, everything we will discuss. The global distribution of the various climates over the earth's surface. Earth's surface upare को जगह रे को type रो climate अछि, को hot and humid climate, तो को जगह polar climate, cold climate, को savanna type climate, ये सब ऊपर हमें complete discussion करिवा. प्रथम हमको बुझिबा दरकार कि what is the meaning of climate. Climate is nothing but the aggregate of weather condition of a region of not less than 32 to 35 years. Weather condition ना गोटे long term average आमे काढिया. मानि नियंतु I will talk about the temperature. मैं प्रत्येक दिन रा temperature condition नबा, प्रत्येक दिन रा temperature first day to day 1 to day 365 तक हमें temperature हिसाब करियो तार average बाहर करियो. So that will be the average annual temperature. In the same way, जेतोले गोटे month पाई मु calculate करबी, that will be the average annual month, average monthly temperature. Average annual temperature को 35 years पर्यंत आमे नबा and तार average बाहर करिवा. 35 टा temperature annual year रा temperature को add करिवा divided by 35. So that will be the average temperature for the 35 years. In the same way, other weather condition जेमते temperature नले सेमते pressure नबा, climatic condition कोंतु, precipitation कोंतु, ये सब 32 रु 35 year पर्यंत हम तार aggregate value बाहर करिवा and जहां हमको final result मिलिबो that is known as climate. So basic difference जदि हम देखियो weather और climate भितर, weather गोटे temporary phenomena and climate is a long term phenomena. 35 years रो aggregate weather condition को हमें climate बोली कहते. Hope you are clear with the weather and climate. The next is the features of the climate. Features of the climate. Climate is stationary. Stationary means it is fixed. ये all of sudden change है, ये चलेनी fixed. This is the change is long term. ये short term change नहीं. वर्तमान देखिले बादल उठी ची वर्षा है गला, तो हमें कहबानी कि there is a change in the climate. हमें कहबा there is a change in the weather. सेठी weather change है ची, climate रे change है. In the same way, so ये जो change हमें देखुछन एठी climate रे, ये होची गोटे long term changes. तो क्लाइमेट चेंज केतेबेले हे पारु, हम वर्तमान कहउछन कि टेम्परेचर एवरेज एनुअल टेम्परेचर ये इंक्रीज हे जाउची, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी जाउची, क्लाइमेट चेंज हे जाउची. इट मींस फॉर द लॉन्ग टर्म we have been experiencing and analyzing the different factors of climate change, then only we can reach at the conclusion that the climatic changes at the for the long term. The next is there, it has variables like the temperature, rainfall. Variable means को factor, which factors they affect the climate. There are many factors which affect the climate. The most important factor that affects the climate is the temperature, because this is the temperature which is directly or indirectly proportional to rainfall, it is proportional to cloudiness, it is proportional to precipitation and other factors of the climate. Temperature जदि increase होची, then the particles in the atmosphere, the intermolecular space will be more, then the density कम होबो, volume बढ़िबो, expand कले volume बढ़िबो, density कम होबो, then there will be upward movement means vertical movement हला परे at the tropopause they will condense, again they will come back, they will fall on the surface of the earth. So तळ ऊपर को उठला एठी pressure कम हला, तळ तळ खसला एठी pressure बढ़िला, तो एठी pressure condition ने change हे चालुचे हम देखली. So this is due to change in the temperature. ये temperature change होगा पाई ये सब changes हमें देख ले. So temperature को इतने हमें कौन कि this is one of the important fact or important variable in the climatic condition, because this is the temperature which will affect other factors as well. ये other factor को भी
important effect पकेब. The next is, this is the spatial concept. Spatial concept means it varies with the space. It varies with the space. प्रत्येक जगह टेम्परेचर कंडीशन सेम नुहे, टेम्परेचर कंडीशन चेंज हुए. सॉरी क्लाइमेट कंडीशन जब देखा प्रत्येक जगह क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुए तो आम कह कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द टेम्परेट जोन नो क्लाइमेट बा पोलर जोन नो क्लाइमेट. So these are the features of the climate. In the same way, feature of the weather जब हम देखा ये डायनामिक क्लाइमेट रे हम देखली कि ये फिक्स्ड, बट weather is डायनामिक. ये डायनामिक कांसेप्ट कौन पाई, बिकॉज ये चेंज हुए. वेदर वर्तमान देखले वर्षा उठेनी कि समय पर वर्षा हो गला तो हम कहि परबा एठी, तो हम एठी इजीली कहि परबा कि वेदर रे चेंज हो गला, वेदर चेंज हो गला. The next ये गोटे टेम्पोरल कांसेप्ट विथ द टाइम ये वेरी करे. यस इट वेरीज विथ द टाइम. द चेंज इज शॉर्ट टर्म. वेदर रे जो चेंज आसीबो ये शॉर्ट टर्म पई चेंज हो. वर्षा नथिला बादल उठिला हठात वर्षा हो गला, सो इट इज शॉर्ट टर्म चेंजेस हला. And the variable देखियो weather रे, then these are the temperature, these are the rainfall again. तो weather कहंतु बा climate कहंतु, variables will always be the same. So this is the basic difference between weather and the climate जहाँ हम discuss करली. एटी each slide रे you can check it out. The next is the atmosphere. Let's talk about the atmosphere. Now the atmosphere, I can divide the atmosphere into two parts. First is the atmosphere and the second one is the soil atmosphere. Atmosphere above the surface of the earth जोटा देखुछंती, and the second is the soil atmosphere. Inside the soil the atmosphere also exists. It means soil भीतर जो air देखुछंती, जो air particles देखुछंती, atmospheric particles देखुछंती, ताको हम soil atmosphere बोली कहंती. It also contains microorganisms. It also contains different type of gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and other gases as well. And in the atmosphere जहाँ में outside the surface of the earth देखुछंती, means above the surface of the earth देखुछंती, ताको atmosphere बोली simply कहा जाए. The next is the what is the significance of the atmosphere, why it is required. In our solar system, earth is the only planet which has the atmosphere, and the atmosphere which can sustain the life. Entire solar system रे earth पाखरे जो atmosphere अछि ये life form को sustain कर परियो, because there is carbon dioxide which is relevant for the photosynthesis of the plants. There is oxygen which is relevant for the respiration of the animals. There is blanket of the gas in the atmosphere that we breathe. It protects us from the blast of the heat radiation which comes from the sun. Sun जो radiation आसे ये entire planet को cool करके रखुची बा warm करके रखुची. ये exactly जति के temperature दरकार for the sustainable maintenance of the life, ये सेति की maintain करके रखुची. So for that purpose हमें कहि परबे कि ये सब कारण पई atmosphere रो significance हम पई बहुत अधिक रहिछि. The next we will discuss about the origin of the atmosphere. जो present atmosphere देखुचंती ये step by step gradually develop होइछि. Originally present atmosphere जहाँ same type रो atmosphere नथिला. Rather there is change ही ये atmosphere हम पाइचंती. Many of the gases they were added in this process. Many of the gases they are removed from the atmosphere. I can give you the example of the helium. Helium was produced by the radioactive breakdown of the uranium and thorium. Argon, this was produced by the radioactive breakdown of the potassium. There are many gases also which are added to the atmosphere by the solar wind. Solar wind, I mean the incoming solar radiation, the wind that comes from the sun. There are many other gases in the atmosphere which their origin can be traced back to the volcanic activities. Volcanic activity रो एमानकर origin हेछि. Water vapor देखिबा atmosphere रे, it is removed by the process of condensation. Condensation hela पर ही धीरे धीरे हम पाको ocean आसीछि, ocean formation हेछि. So the important gas देखिबा in the primordial atmosphere, then that was the nitrogen and the carbon dioxide. And finally later both the gases they were withdrawn and the oxygen was added to it. Oxygen is the newest member in the atmosphere. Oxygen is the देखिबा atmosphere, then it is just before 500 million year oxygen was added. Just before 500 million year oxygen was added to the atmosphere. Then carbon dioxide, how it was removed from the atmosphere. Carbon dioxide it was removed by the rocks. जो कैल्शियम रॉक था जेमति कैल्शियम कार्बोनेट देखुचंती, कैल्शियम ऑक्साइड देखुचंती, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम टाइप रॉक सहित रिएक्शन कला पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन करे. फर्स्ट सेकंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम कार्बन वाज यूज्ड बा कार्बन डाइऑक्साइड वाज यूज्ड. सो एई वे रे एटमॉस्फियर रो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होइतिला.
जो रॉक देखुचंती all these rocks they have the capacity to absorb the carbon dioxide. जो रॉक रे कैल्शियम कार्बोनेट थाए ये कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन कला परे कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन कला पर कार्बोनेट रॉक बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट कहंतु बा सिलिकॉन रेटेड रॉक कहंतु ये सिलिकॉन ऑक्साइड बा कैल्शियम सिलिकेट ये सब फॉर्मेशन करता है. Then let's talk about oxygen. Oxygen is the I have already discussed this is the newest member in the atmosphere. And if we are talking about the early atmosphere, in the early atmosphere, oxygen नथिला. The atmosphere was unoxygenic. There was no oxygen. कौन पाई नथिला? हमें प्रूफ कोड पाउछन कि ऑक्सीजन नथिला बोले बिकॉज जो ऑक्सीडेशन हमें से समय देखुतिले पुराना टाइम माने जेतबे एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन हेतिला से समय जदी ऑक्सीडेशन देखिबा तले ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नथिला रादर दैट वाज इनकम्प्लीट. यूरानियम डिपोजिट ब्लिंड रिवर कनाडा रे अछि. जदी यूरानियम थांता माने यूरानियम से जदी ऑक्सीजन रिएक्शन हेतांता देन डेफिनेटली जदि से यूरानियम देखिबा से टाइम पीरियड रे वर्तमान टाइम पीरियड रे जदि ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुए ताले से एग्जिस्ट करि परिबन बिकॉज़ देयर विल बी रेडियो एक्टिव रिएक्शन ये कंप्लीटली डिके हे जो. बट ये डिके न कि यूरानियम सेमती रहितला. फॉर दैट पर्पस हम को कहउचंती कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हेतिला बा ऑक्सीजन आरंभरू एटमॉस्फेयर रे नथिला. द नेक्स्ट एविडेंस कोन हे पारे कि ऑक्सीडाइज्ड आयरन जोटा हमें हेमाटाइट ओर कहउचंती अवेलेबल नथिला रादर सल्फाइड ऑफ द आयरन ओर जोटा को हम पाइरेट कहउचंती इट वाज अवेलेबल. नेक्स्ट यदि हम देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर जदि रहइबो ताल से कार्बन डाइऑक्साइड रहउतबा कारण ये एसिडिक करियो काहे कि ना कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वाटर CO2 plus H2O it will give you the it will give you one acid. Right, CO2 plus H2O it will give you H3CO2 ये एसिड फॉर्मेशन करिवो एठी. तो एसिड फॉर्मेशन करिवो कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करिवो. जो कार्बोनिक एसिड देखुचंती यदि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर रुए देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड. किंतु यदि एसिड फॉर्मेशन होउची ताले हम जानिबा कि सेठी अल्कालाइन रॉक रही परिबेनी. जो रॉक बेसिक जो रॉक अल्कालाइन से माने एग्जिस्ट करि परिबेनी. द रॉक्स लाइक डोलस्टोन कोंतु लोमस्टोन कोंतु ये सब डेवलप करि परिबे नै जेहेतु एमाने डेवलप करथिले हमें मानियो पड़िबो कि हमको ऑक्सीजन नो सेमति किछि सोर्स नथिला सेठी. ऑक्सीजन आसिला केमते एटमॉस्फेयर को ना दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. इट वाज सपोर्टेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन रॉक रो ऑक्सीडेशन हेला परे फाइनली ये आसिला. फाइनली हमें देखिले कि ऑक्सीजन इट वाज एडेड टू द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन दीटा वे रे ऐड हला एटमॉस्फेयर को गोटेला फोटोसिंथेसिस. द सेकंड इज द फोटोकेमिकल डिसोसिएशन. फोटोसिंथेसिस समस्त जानिथिबे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस इज बीइंग डन बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ने कोन वे व्हेन sunlight acts upon the water particle H2O ऊपर जेतबे ये एक्ट करे सेतबे फोटोकेमिकल डिसोसिएशन हुए. Water molecules when that is photochemically dissociated into the hydrogen and oxygen by the ultraviolet rays. So ये जो प्रोसेस देखुछन ये प्रोसेस रिवर्स न होवा दरकार. डिसोसिएशन हैला पर पुन जदी अगेन ऑक्सीजन एटी रिएक्शन कर दबो का से तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिस जिवे देन अगेन वाटर फॉर्मेशन हो जिवो. कुछ फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होवा दरकार बट द रिएक्शन शुड नॉट बी रिवर्सिबल. ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हेले ही हमको ऑक्सीजन मिल परिबो अदरवाइज मिल परिबो नाही. किंतु ये जो मेथड कहले फोटोकेमिकल डिसोसिएशन यार रिलेवेंस बहुत कम. कौन पे बहुत कम बिकॉज ये रिएक्शन बेसिकली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है एथि पे ऑक्सीजन यूए रे हमको बेसी मिली पारे नाही. द नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस. एटी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सहित रिएक्ट करे ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन करिया पे. दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट सोर्स व्हिच रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड व्हिच रिमूव्ड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and also it added oxygen to the atmosphere. Now let's discuss about the origin of the atmosphere. Origin of the atmosphere, how it was originated. Just give me a second. Okay. So origin of the atmosphere रे हमें देखले volcanic eruption. Sorry, the power was dying, that is why I was switching on the switch. Origin of the atmosphere. There was three steps. There was three stages in that.
one is the volcanic eruption, second is the atmospheric differentiation, then there is biological processes. Volcanic eruption re different type of gases they came to the atmosphere, and on the basis of their density, they were stratified. So layer by layer formation hela, जो मानकर density अधिक, they were near to the atmosphere, they are near to the surface, जो मानकर density कम रहला से माने upper level ले रहले. And then there was biological processes. Biological process रे दुटा important process थिला, one is the chemosynthesis, then photosynthesis. Chemosynthesis was done by the chemosynthesis bacteria, and then photosynthesis was done by the green plants. This is how the atmosphere was originated. The next, let's look into the composition of the atmosphere. There are three type of particles in the atmosphere: gaseous particles, moisture, gaseous particles, solid particle, and liquid particle. Gas are different type of gas, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. Solid particles, there are particulate matter, sand, pollutants, PM 2.5, 7.0, ये सब होते हैं solid particles. Then liquid particles देखिए, then this is moisture. In the composition of the atmosphere, there are two type of gases: permanent gas and the trace constituents. Permanent gas are important: nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide. So यार percentage, this is quite well known fact. Here percentage nitrogen अधिक अछि than oxygen. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, and it extends up to the 100 km. 50 km पर्यंत हमें molecular nitrogen पाती, and above the 50 km you will be finding atomic nitrogen. In the next 50 km you will be finding the atomic nitrogen. So जब हम human being देखिबा बा plant देखिबा बा animal देखिबा हमें directly nitrogen use करि परिबानी. So for that purpose nitrogen fixation is required. Nitrogen fixation, ये nitrogen fixation bacteria द्वारा होता है. इधर कौन हुए ना nitrogen fixation है, nitrogen is fixed and ये convert हो जाए chemical compound को, so that we can consume that chemical compound. ये बैक्टीरिया कोड थांती, ये बैक्टीरिया soil ले थांती, root of some leguminous plant रे थांती, and या व्यतीत nitrogen fixation मध्य cosmic radiation बा meteorites radiation lightning द्वारा बड़े बड़े घड़घड़ी मारियो द्वारा मध्य nitrogen fixation होता है. Then carbon dioxide. What is the relevance of carbon dioxide? There are two most important relevance of the carbon dioxide. The first is the photosynthesis, and the second is the temperature maintenance. For photosynthesis, carbon dioxide is must. When it reacts with water in presence of the sunlight, it forms glucose C6H12O6. That is photosynthesis. The next, it maintains the temperature. ये temperature maintain करे. Carbon dioxide यदि न हुए, then Earth will be a cold desert. कार्बन डाइऑक्साइड रही कारण टेम्परेचर मेंटेन होची अर्थ रो, सो दैट वर्तमान एवरेज टेम्परेचर जदि देखिबा 15 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली. आर्गन जदि देखिबे ताली ये पोटेशियम इनर्ट गैस, पोटेशियम रो रेडियो एक्टिव ब्रेकडाउन हैला परे हमको आर्गन मिलता है. देयर आर सम अदर माइनर गैसेस लाइक नियन को हम यूज करंती ब्राइट रेड नियन लाइट रे. हीलियम को यूज करंती, हीलियम रो बेसिक जदि हम सोर्स देखिबा ताली ऑयल फील्ड रो हमको मिलता है. बट हीलियम रा अमाउंट जदि देखिबा ताले हीलियम अमाउंट बहुत कम एटमॉस्फेयर रे. ऑयल फील्ड तो एते अधिक अछि, बट हीलियम अमाउंट कम होवार कारण कोन ना ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करि जाय, एंड हाइड्रोजन फॉर्मेशन हैला परे ये इन द आउटर एटमॉस्फेयर इट इज लॉस्ट. फॉर दैट पर्पस इट इज फाउंड इन द ट्रेस क्वांटिटी. तो नेक्स्ट इज द हाइग्रोस्कोपिक एंड द नॉन हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल कहले जो पार्टिकल इजीली मॉइस्चर ऑब्जर्व करि परिबे ताको हम हाइग्रोस्कोपिक बोली कहंती. जेमति कि सी सॉल्ट, अमोनिया ए सब. एमान कर इंपोर्टेंस कोन पई दरकार, एमाने ना क्लाउड फॉर्मेशन पई दरकार. एमाने ह्यूमिडिटी इंक्रीज करंती. सो जेतोले न्यूक्लियस ड्रॉपलेट हुए तो कंडेंसेशन बेले सबले हमको न्यूक्लियस गोटे दरकार हुए, एंड दिस हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दे एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर द कंडेंसेशन. नॉन हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल इजीली मॉइस्चर ऑब्जर्व करंतिनी बा मॉइस्चर को रिटेन करंतिनी. माने सॉइल पार्टिकल ही परंती, बैक्टीरिया ही परंती बा एनिमल फ्रैगमेंट्स ही परंती. द नेक्स्ट इज द एरोसोल्स. Aerosols are the suspended particles and the liquid droplets in the atmosphere. एमानकर इंपोर्टेंस जदि देखिबा माने क्लाउड फॉर्मेशन एंड फॉग फॉर्मेशन ने हेल्पफुल होंती. सोर्स डस्ट पार्टिकल, वोल्केनिज्म, सी स्प्रे एंड फॉरेस्ट फायर रू हमको एरोसोल मिलता है. वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ द वाटर सरफेस वाटर इवापोरेशन हैला परे वाटर वेपर हमको एटमॉस्फेयर रे मिलता है. ये मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर्यंत देखा जाता है. द नेक्स्ट इज द ओजोन. ओजोन ऊपर समस्त सुनिथिबे O3.
जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल nascent ऑक्सीजन O सहित रिएक्शन हुए से हमको ओजोन मॉलिक्यूल मिलता है। बेसिकली ओजोन इज देयर इन द स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर। ये प्रोटेक्ट करे हमको फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रे दैट कम्स फ्रॉम द सन। जो ओजोन देखुचंदी ये ओजोन र क्रिएशन जदि हम देखिबा ताले इक्वेटर रे क्रिएट हुए, तो लॉन्ग नाइट पोल रीजन में हुए, तो पोल रीजन में लॉन्ग नाइट होवा द्वारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम हो जाए। सो जो O3 मॉलिक्यूल था ये O3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, O2 प्लस O ऑक्सीजन nascent ऑक्सीजन क्रिएट करे। तो O3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हवार मीनिंग कोन ओजोन लेयर डिप्लेशन हुए इन द पोलर रीजन, कोठी ना जेतबे लॉन्ग नाइट हुए पोलर रीजन में अधिक ठंडा हो जाए, बट ये क्रिएशन हुए इक्वेटर पाखरे। तो जो क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन देखुचंती कोठी, क्रिएशन नियर द इक्वेटर एंड डिस्ट्रक्शन नियर द पोल, दैट इज नोन एज द साइकिल इज नोन एज द चैपमैन साइकिल। इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन। Next is variation in the atmospheric composition. There are some elements in the atmosphere जे टाइम अनुसार वैरी करंती, जे लैटिट्यूड अनुसार वैरी करंती बा हाइट अनुसार वैरी करंती। यदि हाइट अनुसार हम देखिबा किछि पार्टिकल जो मानकर डेंसिटी अधिक से माने लोअर एटमॉस्फेयर रे पाइबा, जो मानकर डेंसिटी कम से मानको हमें अपर एटमॉस्फेयर रे पाइबा। अच्छा, विथ द टाइम जदि देखिबा, विथ द टाइम जदि देखिबा सीजन अनुसार जदि देखिबा तले जदि देखन जदि स्प्रिंग सीजन आसे से समय रे कोन हुए, स्प्रिंग सीजन आसला बेले गछ गुडाक सब कणिबा आरंभ करंती, माने लीफिंग इज स्टार्टेड, ग्रीन प्लांट्स दे स्टार्टेड लीफिंग। तो से समय कार्बन डाइऑक्साइड रो रिक्वायरमेंट अधिक हुए, सो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर कार्बन डाइऑक्साइड रो अमाउंट जदि देखिबा एटमॉस्फेयर इट इज डिक्रीज बाय 3%। तो वाटर वेपर जदि हम सेमते देखिबा ये टेंपरेचर हिसाब रे भी वाटर वेपर रो अमाउंट बा वैल्यू बा क्वांटिटी एटमॉस्फेयर रे चेंज हो जाए। ठीक अछि। सो दिस इज द वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड कोंतु बा विथ रेस्पेक्ट टू द सीजन कोंतु। So I discussed some important facts related to the origin of the atmosphere, including the particles, different particles in the atmosphere. Then I will discuss about the structure of the atmosphere. On daily basis I am taking some classes in YouTube. Next YouTube class tomorrow 9:30 AM रे अछि, जोठी हमें जियोग्राफी कंटिन्यू करिबा। इवनिंग रे भी काली रहिबो क्लास। या व्यतीत जदि अनएकाडेमी स्पेशल क्लास प्लस रे मोर भी जियोग्राफी क्लास वर्तमान चली छि, जोथरे मु जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी रो कोर्स कंटिन्यू करछि। दोज जो माने अनएकाडेमी प्लस रो सब्सक्रिप्शन नहीं नाहंती, दे मे जॉइन टू अनएकाडेमी प्लस बाय यूजिंग द रेफरेंस कोड EGOS EASYOAS, so that there will be 10% off upon your subscription amount. वर्तमान अनएकाडेमी रे मैराथन स्पेशल क्लास चलछि व्हिच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपण जॉइन करि परिबे, ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक एग्जाम पई प्रिपेयर ही परिबे। सिटी B.Ed कोंतु, ASO कोंतु, OS एग्जाम कोंतु, OMC एग्जाम कोंतु, प्रत्येक एग्जाम पई प्रिपरेशन होवा पई आपनको बेस्ट वे होछि अनएकाडेमी रो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस। प्रत्येक कोर्स पई प्रत्येक एग्जाम पई डिफरेंट कोर्स अछि। 30th नवंबर रो समीक्षा बैच स्टार्ट होछि व्हिच विल बी देयर फॉर द 2020 OS एग्जाम पई। दिस इज अ प्री कम मेंस बैच, दिस इज अ प्री कम मेंस कोर्स। So complete explanation mo description box ro de dechi, apan dekhi paribe। You can follow me in Unacademy to get to watch such this type of more videos. The next is the structure of the atmosphere. एठी मु आज केवल सोर्स ऊपर डिस्कशन करछि, कोन कोन सोर्स रो हमको इंफॉर्मेशन मिले थे एटमॉस्फेयर रिलेटेड। द फर्स्ट इज द सैटेलाइट, द सेकंड इज द वेदर बलून एंड द वेदर रडार। या थ्रू हमको एटमॉस्फेयर रिलेटेड सोर्स मिलता है। First meteorological satellite देखिबा, then this is TRIOS, this is the TRIOS 1, this is the first meteorological satellite. The India case रो देखिबा, then this is the INSAT series. INSAT series रो most important significance होची कि ये tropical cyclone को with precision ये डिटेक्ट करि पारे। INSAT series. Then identifying the atmospheric layer, different type of atmospheric layer देखिथिबे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ना सुनिथिबे। ऑन डिफरेंट हमें को एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर रे डिफाइन करि परिबा, डिवाइड करि परिबा डिफरेंट वे रे। टेंपरेचर हिसाब रे हमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर करि परिबा। केमिकल रिएक्शन अनुसार को केमोस्फियर करि परिबा। आयन रो अवेलेबिलिटी अनुसार आयोनोस्फियर बा आयोनाइजेशन हिसाब रे आयोनोस्फियर कहि परिबा। एंड देन कंपोजिशन हिसाब रे हेटेरोस्फियर एंड होमोस्फियर। होमोस्फियर कहले हमें 88 किलोमीटर पर्यंत बुझाई थाए। होमोस्फियर रे देयर इज कांस्टेंट मिक्सिंग, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कांस्टेंट मिक्सिंग हेतांत। तो एठी होमोस्फियर रे हमको गोटे पर्टिकुलर रेशियो रे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मिलନ୍ତି। बट इन द हेटेरोस्फियर 88 किलोमीटर अबव गले एठी माने गोटे प्रॉपर रेशियो बा स्पेसिफिक रेशियो रे हमको गैस माने अवेलेबल हे नथांत।
So this is the concept related to homosphere and heterosphere. Again, the heterosphere is classified into four parts. The first part is the molecular nitrogen. ये 88 ରୁ 200 किलोमीटर पर्यंत molecular nitrogen मिले. 200 ରୁ 1125 किलोमीटर पर्यंत atomic oxygen layer मिले. Next 1125 ରୁ 3540 किलोमीटर पर्यंत helium layer मिले. And then atomic hydrogen layer जब देखिवा ये 3540 किलोमीटर above आसिबो up to 9660 किलोमीटर. ठीक है. So thank you everyone, those who have attended the class. I will discuss the same concepts in the upcoming classes. एउठु हमें next class रे discussion हमें एउठु start करिया. So thank you everyone.